हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंका। मैं ऑटो कैड सेंटर्स की ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। अभी हम स्केच से स्टार्ट करेंगे। देन लाइन कमांड लेंगे 45, एंटर, देन 30, एंटर, देन 45, एंटर, देन क्लोज, escape. After that line command, then 15, enter, then 45, enter, then 15, escape. After that 45, enter, then again 45, enter, then 45 or close, then line again, then 15, enter, then 30, enter, then close or 15, enter. Okay, the sketch is completed. Then हम इसको डायमेंशन देंगे 45, 15 स्पेस। एक बार डायमेंशन देने के बाद हमें स्पेस क्लिक करना होता है, अदरवाइज फिर से हमें सिलेक्ट करना रहता है। लीनियर 10 स्पेस 30 स्पेस 15 and again 45. This is 45, this is 45 and this is also 45. Okay, then one sketch is completed. दूसरा स्केच बनाएंगे जिसमें हम फिर से लाइन कमांड लेंगे। ओके, तो ये हमारा रहेगा 40, एंटर, 80, एंटर, अगेन 40, एंटर, देन 20, एंटर, escape. Again line command 20, enter, then 20, enter, then 40, enter, then it close. Again line command. इधर हमें मिड पॉइंट लेना है, तो मिड पॉइंट अगर हमारा नहीं शो हो रहा है तो इधर क्लिक करके ये हमें मिड पॉइंट सिलेक्ट करना है, एंटर, एंड देन हमें लाइन कमांड लेना है और ये मिड पॉइंट ये, देन लाइन कमांड ऑर्थो ऑफ ये मिड, ये कंप्लीट हो गया हमारा स्केच। लीनियर फोर्टी, स्पेस 80,
is 40 again. This is 40. स्केच कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये डायमेंशंस हैं, ये बहुत छोटी छोटी आ रही है। ये अभी ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है, जैसे बहुत छोटी है। तो अगर हमें इन्हें बड़ा करना है तो क्या करेंगे, डी, एंटर एंड देन मॉडिफाई, देन सिंबल्स। ये 2 है तो इसे हम 3 एंड टेक्स्ट से भी 3, एंटर, देन ओके, क्लोज। ये हमारे अभी हमारे ये बड़े आ गए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।